Yes, very good. So we have finished exercise 9.1 of chapter 9, in which we have learned how to add and how to subtract algebraic expression. Now today we'll continue with the same chapter, exercise 9.2, in which we will learn how to multiply two algebraic expressions. Right? Chaliye, let us start exercise 9.2. Question number first. I am doing second part. Minus 4p multiply 7p. When we are doing multiplication, जैसे मैंने आपको बताया था, when we are doing addition and subtraction, we need the like terms. We can add like terms, we can multiply, we can subtract like terms only. Unlike terms, यानी कि 2pq में से 3ab it can never be subtracted. In 2pq 3ab can never be added, right? Only like terms, they can be added and they can be subtracted. But in case of multiplication, what you need to do, suppose here 7pq is there, here it is minus 4p. Both are unlike terms. Still we can multiply them. When it is a concept of multiplication, it doesn't matter that whether the terms are like or not. Even the unlike terms we can multiply. So what is the question? Minus 4p, it is to be multiplied by 7p. What to do? You just have to see that in these two numbers, what are the numbers which are, you can say, of the same category. For example, this is minus 4, this is 7. You multiply minus 4 into 7. This is p into p. You multiply p into p. That means the terms having same factors, they will be multiplied to each other. Minus 4, constant. From here, constant is 7. So we are multiplying minus 4 and 7. Here it is p. It is again p. So we'll multiply p into p. Now see, minus 4 into 7 is 28. And what you can say about p into p? You have done exponent and powers in standard 7. You know, when we do the multiplication, power get increases, power get added. This is p ki power 1, p ki power 1. When multiply, it becomes p ki power p square. Now 28 minus 28 multiplied by p square hardly matters, can't be multiplied, directly write minus 28 p square. This is the answer. So whenever you are multiplying, choose the common factors having the same, you can say, same variable coefficients, and then multiply, right? Chaliye, let us start. First question I am doing third part. Question first third part. Question for first third part is minus 4p multiplies 7p cube. Now slowly and slowly you will learn the concept, and then there is no need to collect the constant and collect the, you can say, other term. You can easily one to one combination के साथ भी या one to one correspond के साथ भी कर सकते हो. Minus 4 into 7 minus 28. Right? Directly I am writing. ठीक है? P into P, P की power 2. And Q is alone, it will be written as it. If you find it difficult, then better to do it in the previous way. Minus 4 associated with 7, P associated with P, and Q is alone. So the answer is minus 28p square Q. Collect the like terms, the factors, and then multiply. Like factors, I should say. Collect the like factors and then multiply. Rest of the parts will be your homework. Let us start with question number second. Question number second. What is the question number second? It says, we are given the length and breadth of the rectangles, and we want to find their area. So first of all, I would like to do the third part, which length is given to be 20x square and breadth is given to be 5y square. 20x square and 5y square. These are the length and breadth. We need to find area. So write down the formula for area. Area is equal to length into breadth.
that is 20x square into 5y square. So you have written the area. So collect करो 20 into 5, x square के जैसा कोई भी नहीं है, written as it is, y square के जैसा भी कोई नहीं है, written as it is. जिन factors के जैसे like factors नहीं है, you have to write them as it is. So this becomes 100 x square y square. This becomes 100 x square y square. Right? Area of the rectangle formula we know earlier, length into breadth. So I am writing the value of L and B and then multiplying it accordingly and getting the answer. Anji Ridham, what do you want to? मैम हम ये वाला आंसर सीधा भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे क्वेश्चन है 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं. लिख सकते हो, लिख सकते हो. चलिए, now I am doing the last part. आपने 7th में भी किया हुआ है इसको. Last part is length is equal to 3mn. Length is equal to 3mn and breadth is equal to 4np. Length is equal to 3mn and breadth is equal to 4np. So we need to find area. Area is length into breadth. 3mn into 4np. Right? 3 multiplied by 4. m के जैसा कोई भी नहीं है, m is alone. n के जैसा एक n इधर, एक n इधर. Collect them and p is alone. So this becomes 12 m n square into p. N into n, n की power 2. So collectively it becomes 12 m n square p. Will the answer be the same if I put write 4np first and 3mn secondary? अगर मैं 4np को पहले लिख दूं, 3mn को बाद लिखूं, तो आंसर सेम आएगा? आंसर भी सेम. If I write 4np first and आंसर सेम आएगा? Vritti, you tell. Will the answer be same? अगर 4np पहले लिखें 3mn बाद में, दोनों आंसर सेम होंगे, फिर आंसर सेम आएगा हमारा इसके जैसा. यस मैम. यस, बिल्कुल सेम आएगा. मल्टीप्लाइंग ऑर्डर डजंट मैटर. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. Whether you are multiplying first number with the second number or you, for example, you are multiplying 2 with 4, answer is 8. You are multiplying 4 with 8, answer 4 with 2, again the answer is 8. So whether you are writing this to be the first or this to be the first, the answer will be the same. ठीक है, order doesn't matter. चलिए, turn over the page. Let us start with question number 3. थर्ड क्वेश्चन अपने आप करना है, ऐसे ही टेबल फिल करना है मल्टीप्लाई करके. दैट आई एम लीविंग. क्वेश्चन नंबर 4 आई एम स्टार्टिंग विद. क्वेश्चन नंबर 4. दिस टाइम द लेंथ, breadth and height of cuboid are given to us. Length, breadth and height of cuboid, they are given to us. I am doing third part. In the third part, length is x1, breadth is 2, and is xy, breadth is 2x square y, and h is 2xy square. ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें दी हुई है. We want to find the volume of cuboid. We all know what is the formula for volume of cuboid. 6th में किया था हमने. Height. If you remember the formula for the volume of cuboid, rather last class में भी किया था, visualizing solid shapes में. L into B into H is the volume of the cuboid. Let us replace the values. xy into 2x square y
into 2xy square. Right? xy into 2x square y into 2xy square. मैंने तीनों टर्म एल बी एच की वैल्यू पुट कर सी. कलेक्ट x, सभी में से x को इकट्ठा कर लो. कलेक्ट y, सभी में से y को इकट्ठा कर लो. एंड देन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कौन से रह गए? इधर कुछ है नहीं, इधर 2 है और इधर भी 2 है. सो वी हैव कलेक्टेड x को इकट्ठा कर लिया, y को और कॉन्स्टेंट्स को. नाउ सी, मल्टीप्लिकेशन का साइन बेसिस सेम पार्ट्स गेट एडेड. यू नो व्हेन यू डू द मल्टीप्लिकेशन, बेसिस सेम हो पावर एडेड हो जाती हैं. वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा बढ़ती हैं. जैसे कि आप x में x ऐड करोगे 2x, पावर वही रहेगी. बट जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, व्हेन यू विल ऐड 2x to 3x, answer is 5x. But when you multiply x into 2x square, answer will be 2x cube. एडिशन में पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लिकेशन में पावर गेट इंक्रीज्ड. सो इफ यू मल्टीप्लाई x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, पावर सारी ऐड हो गई, इट बिकम्स x की पावर 4 into y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, ऑल द पावर्स एडेड, y रेज टू पावर 4, 2 2 जा 4. तो इसको सारे को मल्टीप्लाई, 4 को पहले लिख दो, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारी अब फैक्टर्स अलग अलग हैं. तो यू विल बी राइटिंग हियर 2x4 y4. दिस इज आंसर. 2x4 y4, 2x4 y4. Right? Volume. Rest of the parts will be your homework. Note कर लो. Now we will start with question number 5. Fifth question is obtain the product. हमें product find करनी है. So I am doing fourth part first. A multiply, second term is 2b, 3c and 6abc. Now there is one more method of multiplication. जैसे कि हम ये इसको मल्टीप्लाई करें 2 into 4 into 3 into 6, 2 4 जा 8, इनको ऐसे लिखो 8 3 जा 24 एंड देन आंसर. इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2b into a becomes 2ab, बाकी ऐसे लिखो. आप दो दो टर्म्स को उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो. पहले 2 को कर दिया, बाकी आई हैव रिटन इट एज इट इज. राइट? नेक्स्ट, multiply these two. 2 3 are 6, ABC. अब जो रह गई उनको मल्टीप्लाई करो. 6 6 are 36. A into a square, B into b square, C into c square. This is also one way. पहले मैं क्या कर रही थी, सबको कलेक्ट कर रही थी अलग अलग से. कांस्टेंट को अलग से कर लिया, ए वालों को अलग से कर लिया, बी वालों को अलग से कर लिया. ये भी एक तरीका होता है कि दो दो टर्म्स को करते जाओ. पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को किया, जो आंसर आया उसको थर्ड टर्म से किया, जो आंसर आया उसको फोर्थ टर्म से किया. दिस इज ऑल्सो वन वे. Now I am doing third part of the same question. Note it down. Note down the fifth part. Right? So third part of the same question. The question is
2 multiply 4y multiply 8y square multiply 16y square. So first 2 will be multiplied 8y. Then these two 64y into y cube 16y square. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 8 का 64 y into y square y की पावर 3. Now these two will be multiplied. That means 64 into 16. 1024 y की पावर 3 into y की पावर 2. Multiply में parts get added 3 plus 2 5. So this will be y की पावर 5. 1024 into y raised to power 5 will be the answer. Rest of the parts will be your homework. Okay. हाँ जी सोमिल, what do you want to ask? मैम मैंने कहना था कि इस क्वेश्चन में y की पावर 6 नहीं आएगी, एक और वो y को ऐड करेंगे. एक मिनट, y इंटू, वही बात, आप वही गलतियां करते हैं ना बच्चे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 2 6, गलत. मल्टीप्लिकेशन का साइन बेसिस से मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा ऐड होंगी. सोमिल ये गलतियां बच्चे पेपर में भी करके आते हैं जो आपने पूछी हैं. मैम नो मैम, आपने क्वेश्चन गलत लिखा है. 16y क्यूब आना मैम वापस. अच्छा, फिर अगर यहाँ पे y क्यूब है फिर 6 आएगी. ठीक है मैम यस मैम, मैं यही है. फिर 6 आएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बेसिस सेम, पार्ट्स विल गेट एडेड. चलिए yes. Now till now we have learned that how to multiply a single term with the another single term. In next exercise we will learn that if we are having two terms in a bracket and it is to be multiplied, say a monomial. Monomial means one term outside. Multiply with monomial means one term. How to multiply monomial with binomial? पहले क्या था, monomial monomial से multiply हो रही थी पिछली exercise में. Now we will learn how to multiply monomial by a binomial. So let us start with the exercise in which we will learn how to multiply monomial by binomial. So I am doing first question, second part. Exercise 9.3. Question first, second part, AB and A minus B. These are to be multiplied. Now first of all, जिसमें terms कम है ना उसको पहले लिखना है. इसमें terms कम है इसको पहले लिख दिया, इसमें terms ज्यादा है इसको बाद. अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई कर, ना भी साइन डालोगे तब भी चलेगा. फर्स्ट सिंगल टर्म, देन इन द ब्रैकेट द टू टर्म्स, राइट. बीच में चाहे मल्टीप्लाई डालो चाहे ना डालो. Now the thing is how we will multiply. To multiply we will open the bracket. How to open the bracket? This is the question. This is the person who is standing outside the house and these are the two persons who are living in the house. What will happen? This person will go to this house and will meet each and every person of the house. ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी के घर में जाते हैं, बस हम कहते हैं कि मैंने तो अपने फ्रेंड को मिलना है, उसके पापा मम्मा वहां पे बैठे हुए हैं, हमने कोई विश नहीं किया. ठीक है, हम सबको मिलते हैं अगर किसी के घर पे जाते हैं. ठीक है, सो इफ वी आर एंटरिंग इन दिस हाउस we will meet each and every person. As we entered in some house, firstly we ring the bell. This is courtesy कि हम किसी के घर पे जाते हैं पहले बेल रिंग करते हैं. इसी तरह से when this number will enter inside, will multiplied inside, first of all signs will be match up. कैसे? इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस प्लस प्लस. ठीक है, firstly this multiply by this.
ठीक है, कुछ बच्चे सीधा ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, मैंने ऐसे लिखा अभी फॉर टाइम बिंग, जैसे से आ जाएगा फिर थोड़ा कर लेंगे. अगेन नाउ दिस पर्सन विल मीट दिस पर्सन, बट बिफोर दैट मैचिंग अप द साइन, प्लस माइनस माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी. This person enters in this house, meet each and every person who is living in the house, meeting the first person and then meeting the second person. But before that, matching up sign is compulsory, plus 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 minus minus, right? Now multiply these two, a into a square into b अकेला ही. यहाँ पे दोनों में से कौन से फैक्टर सेम है? a जैसा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसे ही b into b b square. Now can we subtract these two? आंसर मैंने यहीं पे छोड़ दिया. क्यों छोड़ा? Can we subtract these two? हम इन दोनों को subtract कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? Because these are not like terms. ये like terms नहीं है, subtract नहीं हो सकती. इसलिए आंसर्स यहीं पे रहेगा. चलिए one more question part I would like to take. So now I would like to take third part. Same question, third part. Third part, a plus b and 7a square b square. So what I told you, keep one thing in mind, that out of these two, the term which is having the minimum members, that will be written first. ये वाली, इसमें कम members, इसमें ज्यादा है, इसको bracket. Now this person, ये एक ही term है, क्योंकि इसमें plus minus का कोई sign नहीं है. This person will go in this house and meet each and every person. Before that, matching up sign, plus 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 7a square b square meeting a, right? Then again match up the sign, plus 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 7a square b square meeting b. Person enters in the house, meeting all the members of the house. Now multiply 7 जैसा कोई नहीं है, 7. a square जैसा फैक्टर a है, a square into a की पावर 3, b से स्क्वायर अकेला. 7 वैसे का वैसा, a square वैसे का वैसा, b square into b, b cube. Yes, Kashish, roll number 16. What do you want to ask? मैम बीच में से आपकी वॉइस नहीं आती है, माइक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है. Wait, let me see. चलिए. Is it okay up to this? Yes, Kritika, what do you want to say, Kritika? Anshika, roll number 3. Anshika. Nothing is there to say. चलिए. So this was the first question of the exercise. चलिए, let us start with the second question. I am leaving table filling है, अपने आप करोगे. Third question I am starting with. Question number 3. First part, a square 2 into a raised to power 22 4 into a raised to power 26. A square 2 into a raised to power 22 into 4 into a raised to power 26. Now I told you कि आप दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. पहले आप इन दोनों को करो. 2 1s are 2. A square a की power 22 will become a raised to power 24. ठीक है. Now these two will be multiplied. 2 4s are 8. A raised to power 24 into a raised to power 26. Multiply का sign basis same. Powers will get added and this will become a raised to power 50. This was the third question, first part. Let us do third question, second part.
Third question, second part. Third question, second part is 2/3xy into -9/10 x square y square. सेम फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट फैक्टर्स को इकट्ठा कर लो. 2/3 into -9/10. x वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई एंड y वाली टर्म्स इकट्ठी होगी. दैट मींस we will multiply the like factors. If in this constant factors, if some cutting is possible, then do. 3 3s are 9, 2 5s are 10, minus 3/5. X into x square, x cube. Y into y square, y cube. So minus 3/5 x cube y cube is the answer. Minus 3/5 x cube y cube is the answer. Okay, बात. Rest of the parts will be your homework. Let us start with question number 4. Question number 4. Simplify 3x into 4x minus 5 plus 3 and find the value for x is equal to 3 and x is equal to 1/2. ये बात की बात है. पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. Simplify. You know, sometimes in the questions when we were doing first exercise, it was written subtract or add, right? And second exercise when we were doing, it was just multiplication. Now when the word simplify is written, that means you have to add, subtract, multiply in the same expression. Same expression में आप multiply भी कर दोगे, add भी कर दोगे, subtract भी कर दोगे. चलिए, let us start with the simplification. What is the meaning of simplification? That means solve the whole expression till you can solve. First of all, this will enter inside, plus 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 sign match हो गया, and this will multiplied by this. कैसे होएगा? 3 4s are 12 x square. मैंने सीधा ही किया multiply इस बार. Hope you understand. 3 4s are 12 x into x square. Now match up the sign. Plus minus minus. 3 5s are 15 and x will be written as it is क्योंकि x इसके जैसा कोई नहीं. Is it clear? Kritika, what do you want to say? मैम अभी भी मैम ऑडियो वाली प्रॉब्लम आ रही है. बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा. कृतिका, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा. हाँ जी रिदम. मैम आपकी ऑडियो बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रही है. चलो लेट मी सी. अभी तो मिनट ही 2 रह गए वैसे. Now just let me know. Somil, is it okay? My voice is audible to you? Ma'am, now it is audible. Okay, चलिए. Right, so what we did, plus 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 3 4s are 12 x into x square plus minus minus 3 5s are 15 into x plus 3. तो ये हमने लिख दिया. Simplification कर दी. Now he says after simplification find the value at x is equal to 3 at x is equal to 1/2. First of all, we'll find the value at x is equal to 3. What is the meaning of finding the value at x is equal to 3? The meaning is wherever x is there, put x is equal to 3. देखना. At x is equal to 3, wherever x is there, write 3. Nothing is to be changed. Square है, ऊपर square रहेगा, minus रहेगा, बीच में multiply है, plus, everything will remain same. Wherever x is there, you will write it to be 3. Right? So this is 12 into 9 minus 45 plus 3. This becomes 108 minus 45 plus 3. Plus minus minus, when you subtract it, you will get it to be 53 plus 3. This becomes 56. So you are getting the answer to be 56. X is equal to 3.
पुटिंग x इज इक्वल टू 3. अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर देते हैं. नो, जो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया आपने x इज इक्वल टू 3 उसमें पुट करना है. अब at x is equal to 1/2, let us put x is equal to 1/2. This is simplified expression. Put x is equal to 1/2. Nothing is changed. Just in place of x I'm writing 1/2. So this will be 12 into 1/4 minus 15/2 plus 3. This get cancelled. 3 minus 15/2 plus 3. So you are having 3 minus 15/2 plus 3. ये दोनों एक जैसे हैं, पहले इनको ऐड कर दो. 6 minus 15/2. Now take the LCM. 2 is LCM. 12 minus 15 minus 3/2 is the answer. So when you will put x is equal to 1/2, the answer will be minus 3/2. Right? B part will be your homework. B part will be your homework. Hanji, Paul 8C. Bete, what do you want to ask? The answer is 66. You have written 56. Which is speak loudly. I'm not able to listen to you. Repeat it. Ma'am, I'm saying that the answer is 66. 66. 1/2 put करके. No, ma'am, x is equals to 3. I'm using. Just a minute, wait. Okay, ठीक है. That is 66. ठीक है बेटे. That is 66. Thank you, Paul. चलिए, this is all.